In the last lecture, we have learned what is internet, what are the two lines of internet, how to get access to internet. Okay, all those things we have learned. So today we are going to learn what are the advantages of internet and as well as disadvantages of internet. The internet is used for research purposes. We all use internet to do research. Many scholars nowadays, they do PhD and other kind of research for the sake of research paper, or it can be a minor research, major research. So for all those research purposes, internet has become a very easy tool to get the information. In the earlier days, if you want to get the information, you have to go to the library, and then you can get access to books, magazines, and so on, and from that you might have got the information. But nowadays, as information is the internet is the information superhighway, you can get ample information available online. Then next is internet is a medium for communication. We all are communicating with each other. You are sitting at home, I am sitting at my place, correct? So even in remote locations, suppose you are there in Maharashtra and your friend is there in Ladakh, but still you can contact, you can see the person, you can talk face to face. Or if suppose you are in India and your say sibling or your relatives are there abroad, still you can get connected, you can communicate each other by using internet. Next is for education and self-improvement purpose. Internet provides different kinds of material which is available for getting educated. Okay. So if you want to get education of any kind, number of different kinds of educational materials are available. And suppose it is not related to your education, but you want to improve yourself. Say, for example, your English is weak and you want to improve your English. So you can watch various videos, PPTs available, lessons available online, and through that you can improve yourself. So ample educational material is available online that can be used to get educated as well as for the sake of self-improvement. Next is electronic newspapers and magazines are available online. E-paper available hai na? E-paper, e-magazines are available. So you need not to buy paper, you can just search the paper and you can read it. So this is how easy it has become. Earlier, agar hum logo ko padhna hai newspaper, go in the market, then purchase the newspaper, purchase the magazine and then read. But nowadays it has become very easy and accessible. You just need to type the keywords and you will get it at a few minutes. You can get and you can read the newspapers and magazines online. Internet also serves as a medium for entertainment. Various kinds of modes of entertainment are available online, such as online television is available, online games, songs, videos, social networking apps are available. So it has become a medium for entertainment. Okay, entertainment के लिए भी internet हम लोग use करते हैं. You all are doing it, so I need not to tell about that. Internet provides concept of electronic commerce. Electronic commerce पता है ना, e-commerce, business करते हैं लोग. Different kinds of business deal are done on internet. Internet allows us to to use services like internet banking, matrimonial services, online shopping, online ticket booking, online bill payment, data sharing, email, a number of different things we do by using internet. I hope this is clear. Any doubt is there? If you have any doubt, you can ask or we'll move to next. Okay. Manoj, you have doubt that only one service provider is there. See, it is the main service provider. Manoj, you were present there in the last lecture जब मैंने पढ़ाया था इंटरनेट का. तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ल्ड सर्विस प्रोवाइडर होता है, वर्ल्ड ISP, वर्ल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. वो वर्ल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपको एप्लीकेशन देना होता है. इंडिया से कौन अप्लाई करता है? VSNL.
तो बीएसएनएल को इंटरनेट एक्सेस मिलता है। वो इंटरनेट एक्सेस अगर आपको चाहिए आपके सिटी में, तो वो कंपनीज को किसको अप्लाई करना होगा? यू हैव टू अप्लाई टू बीएसएनएल, दैट इज विदेश संचार निगम लिमिटेड, दैट्स ओनली वन। एंड फ्रॉम देयर यू कैन हैव, you are having local internet service provider, local ISPs. You might have not given attention, that's why you are asking this question today. Okay, so we'll move to the next slide. Now, these are the disadvantages of internet. There are always chances to lose your personal information such as name, address, credit card number, and too many details. Many a times on internet you download different games, you give access to your camera, your personal photos, your personal information, everything you share. So there are chances that you lose your personal information. Next is spamming. Spamming means receiving unwanted emails in bulk. What is this? These spamming are unwanted emails. Those are sent to you in bulk. Bulk मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में. Bulk. These emails serve no purpose and lead to obstruction of entire system. ये क्या करते हैं? इसका कुछ भी यूज नहीं होता और ये आपका जो टोटल ईमेल है, जो ईमेल आईडी है, उसमें obstruction मतलब difficulty create करने का काम करते हैं. That's why suppose if you receive any nowadays email service providers, what they have done, they have created a spam folder. So such kind of mails are directly sent to the spam so that the system may not get disturbed. बहुत बार ऐसे होता है कि अननोन सेंडर है और कोई ऐसे फिशी लगता है, सस्पिशियस लगता है, तो स्पैम में जाता है. करेक्ट. सो स्पैमिंग इज ऑल्सो डन. नेक्स्ट, वायरस. वायरस वी ऑल नो, कोरोना वायरस तो अलग है, ये इंटरनेट का वायरस है. सो इंटरनेट वायरस that can be easily spread to different computers which are connected on net, and such virus attacks may cause your system to crash. बहुत बार सिस्टम क्रैश होते हैं ना, वेबसाइट्स क्रैश होते हैं, आपका लैपटॉप हैंग हो जा सकता है या फिर हैक हो सकता है. सिस्टम क्रैश, मेनी आपके फाइल्स, इंपॉर्टेंट डेटा माइट बी गेट डिलीटेड. So this is a very dangerous thing of internet. Virus attack is a dangerous thing. Malware, and one more is there. Those viruses are very dangerous. If they enter your system, into your system, they totally destroy that particular device, we could say. There are various websites that do not provide authentic information. Authentic matlab correct. सो ऐसे बहुत से वेबसाइट्स हैं जो ऐसे ही क्रिएट किए होते हैं लोगों ने और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, एंड दैट कैन लीड टू मिसकंसेप्शन अमंग मेनी पीपल. तो लोगों का गलत नजरिया बन जाएगा किसी भी चीज के तरफ देखने का, मिसकंसेप्शंस. ओके, सो there are many disadvantages of internet, say such as it affects your health. Nowadays people are facing psychological issues because they are using internet, mobile phones, laptops a lot. They are using it for hours, even in the late in the night. Say usually you should sleep by 10:30, usually it should be, but nowadays the young generation is awake till 2 p.m. in the night. So it is disturbing the whole physical system, physical body structure, as well as your mental strength. Not only young generation, even kids, everything is going on online nowadays. So kids have got addicted to the mobile phones, on internet, different kinds of games they are playing on internet, and it is getting dangerous now. Say recently, in the last month, one boy, he was using internet, a phone of his mother, and he was playing that PUBG or some other game, and he has spent 12 lakhs of his mother from her account. ये 12 लाख मतलब 12 लाख कमाने के लिए उसको कितना, मतलब ये कितना उसने काम किया होगा, और वो 12 लाख उसने इतने मिनटों में खत्म कर दिया.
So such kind of disadvantage, there are many disadvantages. If we start discussing it, we have to spend the whole day, but we are not going to see the black side of it, but we are going to focus the advantages. And I would prefer that you should use internet, but with the limited, say, with certain restrictions. You have to, certain discipline you have to give to yourself, and use it but properly with certain restrictions. I hope you understood internet. समझ में आ गया आपको internet? Understood this? Shall we move to the next point? What is next? Second thing, the in this chapter, technology enabled communication, is email. Now, what is the long form of email? It is important for your objective type question. The long form of email is electronic mail. क्या है लॉन्ग फॉर्म ईमेल का? इलेक्ट्रॉनिक मेल. याद रखना, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये पूछने वाली हो. जॉट इट डाउन समवेयर, नोटबुक में लिख लो ये. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ईमेल? इट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. So email or electronic mail means it is a means of sending messages, text, computer files between computers via internet. तो ये क्या है? इंटरनेट. ईमेल क्या है? इट इज अ मीन्स. मीन्स मीन्स नथिंग बट द मीडियम. मीडियम हम लोगों ने पढ़ा है ना. सो टू सेंड मैसेजेस, टेक्स्ट, कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स, और ये कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए ऑन नेट. सो इंटरनेट से अगर ये कंप्यूटर कनेक्टेड है तो आप क्या कर सकते हो? आपके कंप्यूटर से कोई भी मैसेज है, टेक्स्ट है, कंप्यूटर में से फाइल है, वो शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो. सो इट इज अ मीन्स और मीडियम दैट हेल्प्स यू टू ट्रांसफर योर मैसेजेस, टेक्स्ट, कंप्यूटर फाइल्स. But the thing is, those computers should be online, or those should be connected to internet. So we send messages by using these telecommunication links, and it is possible to send messages if two computer terminals are connected on internet irrespective of their distance. यहाँ पे डिस्टेंस बिल्कुल भी अगर कितना भी डिस्टेंस है, डजंट मैटर, यू कैन सेंड द मैसेज, यू कैन सेंड द मेल, बट दोस टू कंप्यूटर टर्मिनल्स मस्ट बी कनेक्टेड ऑन नेट. इंटरनेट पे वो कनेक्टेड होने चाहिए. दैट इज द क्राइटेरिया. The message is typed on computer screen at one end, which will be conveyed by using electronic impulses. जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आप टाइप करते हो वो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस में कन्वर्ट होता है. देन इट विल बी विजिबल टू अनदर पर्सन ऑन हिज कंप्यूटर स्क्रीन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डज ईमेल वर्क. ये ईमेल कैसे काम करता है हम लोग करें. सी, कंप्यूटर यूजर्स स्वैप मैसेजेस वाया लार्ज सेंट्रल कंप्यूटर. स्वैप मतलब आप सेंड करना. ओके, सो कंप्यूटर यूजर्स क्या करते हैं? दे मैसेज सेंड द मैसेज वाया अ लार्ज सेंट्रल कंप्यूटर. लार्ज सेंट्रल कंप्यूटर्स आर नोन एज होस्ट कंप्यूटर्स. तो आप जो कोई भी मैसेज टाइप करते हो, सेंड करते हो, वो कहाँ पे जाता है? पहले होस्ट कंप्यूटर में जाता है. इन लार्ज ईमेल सिस्टम्स देयर आर मेनी होस्ट कंप्यूटर्स. अगर ईमेल सिस्टम छोटी हो तो उसमें एक ही होस्ट कंप्यूटर होगा, लेकिन लार्ज ईमेल सिस्टम जैसे सच जीमेल, तो उसमें एक से ज्यादा होस्ट कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं. ईच मेंबर इन द ईमेल सिस्टम हैज गिवन एन ईमेल बॉक्स. आप सभी को ईमेल आईडी आप सभी के पास, तो आपके पास एक ईमेल बॉक्स सभी को अवेलेबल है ना. सो वी ऑल आर मेंबर्स ऑन दिस सिस्टम and we get an email box, and each email box has a unique name or identification code. तो ये जो ईमेल बॉक्स को एक यूनिक नेम, आइडेंटिफिकेशन कोड देते हैं, वो यूनिक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, दूसरे का नहीं हो सकता. अगर आप एंटर भी करना चाहते हो देन इट विल गिव यू नोटिफिकेशन दैट यू कांट यूज दिस यूजर नेम, इट इज ऑलरेडी यूज्ड. सो यू हैव टू गिव द यूनिक नेम, identification code to your email ID. The members of email system gets connected to the central host computer by using internet. तो ये जो इंटरनेट यूजर्स है, ईमेल यूजर्स है, तो वो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं? सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर को. And the microcomputer is online when it gets connected to the host computer.
होस्ट कंप्यूटर पे कनेक्ट होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, उसको ऑनलाइन होना चाहिए ना. एंड सब्सक्राइबर्स पोस्ट द मैसेजेस इन ईच अदर्स मेल बॉक्सेस. हम लोग सब्सक्राइबर्स है, वी पोस्ट द मैसेजेस इन ईच अदर्स ईमेल बॉक्सेस. यूजर्स विल गेट द users will get to users will get to know about the message when they get connected to the central computer to check their mailbox. अभी आप लोगों ने मैसेज सेंड किया, ईमेल सेंड किया, तो नेक्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को कब पता चलेगा? व्हेन ही विल कम ऑनलाइन, व्हेन ही विल चेक हिज मेल बॉक्स एट दैट टाइम, and when he will get connected to that central computer, then he will get his mail. Now what I have told you, it is given in this diagram. So you are the sender, okay, you are using your service provider. Email service provider होते हैं ना, email service providers such as Gmail, Yahoo, Rediff Mail, these are the email service providers. So you send message to this service provider, then it will transfer to next that central host computer, then it will send to recipient's email service provider, then from that receiver's email service provider to his say email account, so recipient's email account. तो आप ईमेल जो सेंड करते हो तो आपका सर्विस प्रोवाइडर में जाता है, उसके बाद वो सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर में, सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर में से रिसीवर का जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उसको सेंड किया जाता है, फिर वो रिसीवर को रिसीव होता है. ओके अंडरस्टूड दिस? ये समझ में आ गया आपको ईमेल कैसे वर्क करता है? नेक्स्ट, all about emails. Now subscribers of the email system are known as users. हम सभी लोग क्या है, इंटरनेट ईमेल यूजर्स है ना, so all the subscribers of email system are known as users. Users can access their mails from home as well as from office. Sitting at home, sitting at office, you can access to your mails, you can have access to your mails. Users can compose a message and can send to one user or many at a time. एक मैसेज कंपोज होने के बाद आप एक सिंगल पर्सन को या फिर मोर देन वन पर्सन यू कैन सेंड एट अ सिंगल टाइम. एक ही समय आप एक को या फिर एक से ज्यादा लोगों को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं. Users can also attach video, documents, audio clips, images, PPTs, PDFs, etc. Okay. Now, how to create a login ID. Some of you might not be having email IDs. तो कैसे create करना है? I'm going to give you example of Gmail. So go to Google account creation page. Enter your name. In the username field, enter the username you want for your account. User ID जो बोलते हैं हम लोग, तो ये enter करना है. Enter and confirm your password. Then click next. Then your mobile phone will be verified with the code sent through text. You must click on verify. Then you can get that particular mail ID. Okay. Now what are the advantages of it? It is the quickest means of transmitting messages. बहुत ही कम समय में आप ये मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हो. क्विकेस्ट, इट इज नॉट क्विक, इट इज क्विकेस्ट, मतलब बहुत ही कम समय में आप मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हो. You get instant reply to the message, clarification if both sender and receiver are online. अगर सेंडर एंड रिसीवर ऑनलाइन है तो मैसेज का रिप्लाई, क्लैरिफिकेशन उसी समय हो सकता है. Information or messages received can be stored for future reference or can be disposed of. जो ईमेल्स आपको रिसीव होते हैं वो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो या फिर वो डिलीट भी कर सकते हो. डिस्पोज ऑफ, यू कैन डिलीट इट, रिमूव इट. ईमेल्स आर हाईली कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर. ईमेल्स के हैं, कॉन्फिडेंशियल है, सिक्योर है.
The risk of tampering the message is very low compared to traditional modes. ट्रेडिशनल मोड्स क्या है मैसेज सेंड करने का? लेटर राइटिंग. तो लेटर आप अगर सेंड करते हो पोस्ट से, if suppose any other person gets it and opens and reads and again properly closes the envelope, how the way you will come to know that somebody has read that letter? No. But email, it is very secure and confidential. Only you have the access, only you know the username and id. Suppose the other person knows the user id but doesn't know the password, so only you can open it and you can read those messages. Correct. That's why it is told, do not share your passwords to anybody. You can attach images, video clips, PDF and other documents easily. And emails are delivered extremely fast when compared to traditional post. Traditional posting से आप अगर आप कोई भी letter send करते हो तो इसको पहुंचने में 1, 3, 4 even more than a week or a week can be time. Okay, it can take that much time. But if you're using email, it will send your messages immediately. Next, emails can be sent 24 hours a day, 365 days a year. At any time, you can send your emails. Webmail means emails can be sent and received from any computer anywhere in the world that has an internet connection. It is the definition of this email itself. Emails can be sent to one person or several people. ईमेल आप एक साथ सभी को या फिर एक को भी सेंड कर सकते हैं. Next is disadvantages. Now, what are the disadvantages of email? The recipients needs access to the internet to receive your email. क्या होना चाहिए? Recipient needs access to the internet to receive email. That is one of the disadvantage. आप email तो send कर देते हो, लेकिन वो email होने पढ़ने के लिए, receive होने के लिए उसको internet access चाहिए. अगर internet access नहीं है, you can't read those messages or you can't open that email file. You will not receive it. Internet नहीं है तो receive ही नहीं होगा. Viruses are easily spread via email attachments. Email में जो attach होते हैं, attachment होते हैं, so viruses are chances of spreading the viruses are more. Okay, that's why if there is an unknown person sending you email, do not open that. अगर कोई भी आपके पहचान वाला नहीं है, बहुत बार promotional emails you receive, ऐसा होता है ना, प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए ईमेल सेंड किए जाते हैं. यू रीड दैट. बहुत बार ऐसे भी होता है, फिशी मैसेजेस आते हैं. आई विल लेट यू नो, आई विल टॉक अबाउट दैट, बट लेट अस टॉक अबाउट दिस वायरस फर्स्ट. सो but nowadays to check the virus in the system itself, virus software or virus system to check, analyze the virus, whether virus is attached to it in the internet system itself, facilities are provided. So before attaching any document or before downloading any document, especially Gmail does this, it checks whether virus is there or not. Gmail checks this, checks that. Okay, so viruses are easily spread via email attachments. Next is phishing. Phishing is nothing but sending an email to a user falsely claiming to be a legitimate company to scam the user into providing information such as personal information and bank account numbers on a bogus website, and these details will then be used for identity theft. तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है? आपका जो आइडेंटिटी है उसकी चोरी, मतलब those details will be used somewhere else for some other wrong purposes. That's why आपके डिटेल्स ऑनलाइन देते समय बहुत ही आपको खबरदारी रखनी होती है. और आपको बहुत से ऐसे फिशी मैसेजेस आते हैं ना, सस्पिशियस मैसेजेस आते हैं. ये ईमेल कैसे रहते, कंपनी आपको ऑफर दे रही है, आप ये स्टार्ट करो, इतना आपको मुनाफा होगा, ये होगा, वो होगा. वो आपको इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं, यू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू देम, एंड आफ्टर दैट यू स्टॉप रिसीविंग एनी ईमेल फ्रॉम दैट एंड.
and that information, your personal information, your account number, your other details, they will utilize for wrong purposes. Okay, no guarantee the email will be read until the user logs on and checks their email. आपको पता नहीं चलता whether user has opened your mail and checked it or not, whether he has received it or not. Suppose there is on internet there is an issue, if it is not received, अगर उसको रिसीव नहीं हुआ है, मतलब आपके सिस्टम में से प्रॉब्लम है, देन यू विल रिसीव दैट फेल्योर मैसेज. लेकिन उसको रिसीव हुआ है, but he must be online, he should log in and then he will receive or he will read it. So you don't have any guarantee that the user will read it. Okay, next is spam. These are unsolicited email. Unsolicited means you have not demanded anything. The person, the people, they are sending it on their own, unsolicited emails. That is junk mail. Spam folder is there, junk folder is there on in your email account. Okay, this is all about email. My PPT is not opening, that's the issue, because some other information I would like to give regarding email. Email में मेरे पास और बाकी भी information